Good morning, students. Hello, and how are you? I hope you all are fine. And today we are going to do a very important topic of grammar, that is models. Okay. So, what are models? Models basically we can say वो mood expressing words होते हैं. They are the mood expressing words. So, modal auxiliaries like will, would, may, might, can, could, shall, should. These all are generally used to form certain moods for which English we can say has no inflected word form. ठीक है, they are always used with the principal verb that follows them and they express ideas जैसे कि ability, possibility, permission, command, duty, obligation and property etc. सो मॉडल्स वो वर्ड्स होते हैं जब स्पीकर कुछ भी बोलता है तो वो स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं, जो स्पीकर का मूड, स्पीकर के कोई भी बात कहने के पीछे क्या आइडिया है, द थिंग्स, द वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस द आइडियाज, दोज आर नोन एज मॉडल्स. एंड इन मोस्ट केसेस दे जस्ट इंडिकेट प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम. ओके, मॉडल जो होते हैं वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सो नाउ फर्दर इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वी हैव वेरियस काइंड ऑफ मॉडल्स एंड ऑल द मॉडल्स एक्सप्रेसेस वेरियस काइंड्स ऑफ आइडियाज. सो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द फंक्शंस ऑफ मॉडल्स, सो सी मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, shall, should, will, would, and so many models we have. So we'll start with the first one, that is may and might. May as a principal verb, it is used to denote what? May को हम permission के लिए use कर सकते हैं. Like I say, may I come in, may I go out. So this is a formal permission. May को हम possibility में use कर सकते हैं. It shows the possibilities. जैसे it may rain tonight. तो क्या हुआ? Possibility. When the possibility is very strong, so see, he might not come even if we ask him. वो नहीं आएगा even if we ask him. So here the again a possibility, but it's a different kind of possibility. So we have used might. A wish. Whenever you wish someone that may God bless you, may fortune smile on you. So when it comes to wish, तो उसको भी हम क्या use करते हैं? May. Then we come to can and could. Can is the power or ability, the word that shows the power of ability or the speaker, that is known as can and could. Okay. And then like I can beat you in the race, and even as a child she could sing well. This is can, and the past ability is could. Permission. Now when it is informal permission, so you can go now, this is informal. And when it's a polite request, we can say, or polite permission, तो वहाँ क्या होता है? Could you lend me some money? So here some sort of politeness we can see. तो here यहाँ पे हमने could को use किया. Must is a compulsion, a strong moral obligation. जब किसी चीज को करने की कोई बंदिश होती है कि आपको ये करना ही है, it's a strong moral obligation. So we know we must not tell lies. Soldiers must obey the orders. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, soldiers को orders को obey करना चाहिए. Then it comes to the duty. A judge must deliver correct judgment. ठीक है, जब आपकी कोई ड्यूटी होती है, किसी चीज को करना आपका कर्तव्य होता है. Then fixed determination, like I must get the money back. मुझे पैसे वापस चाहिए. I must get the money back. So it's determination. Then we come to shall and will. Shall and will दोनों के पास में future actions होते हैं. Both of them shows the future actions. Like shall को आप use करते to give a command. He shall have to. It's a compulsion. Members shall pay their dues by the first week of every month. It shows the future action, भविष्य में होने वाले कोई काम को, जैसे I shall be 12 years tomorrow. Now threat भी obviously चीज है. आज आप किसी को threat दे रहे हो तो वो फ्यूचर के लिए ही दोगे. थ्रेट कभी भी पास्ट में नहीं होता. तो threat is always for the future. तो he shall be punished if he repeats his mistake. Now desire, permission. तो यहाँ पे क्या है? Shall I help you in cooking? So यहाँ पे भी क्या है? It's a shall, मतलब ये एक desire है या permission है. Now comes to will. Will is the determination. ठीक है, determination is I will do as I like. I am determined. Determined है दृढ़ निश्चय that I will do as I like. Then comes threat. Threat again वही चीज हो गई, धमकी देना किसी को. तो I will surely ask her. और आप किसी को कहते हो कि ठीक है मैं उससे पूछूंगा, so it's a kind of a threat. So you will definitely say I will surely ask her. In interrogative sentences to show future action, so will he turn up today? So this is again ये future action है but in an interrogative form, so it's with a question mark. So will he turn up today? Then comes the promise. I will definitely come to your place. It's a promise that I am definitely going to come to your place. Wish or willingness. So I will do this for his sake.
दिस इज माई विलिंगनेस और दिस इज माई विश कि हाँ ये चीज मैं करूंगा फॉर हिज सेक, तो आई विल डू दिस फॉर हिज सेक. सो दिस इज नोन एज, वी कैन से, इसको हम विलिंगनेस में बोलेंगे. ठीक है. देन कम्स शुड. शुड को आप हमेशा ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन पे लोगे. आइदर यू आर गिविंग एन एडवाइस टू समवन, आप शुड यूज करोगे. एक वर्ड आता है लिस्ट, LEST, तो उस लिस्ट के साथ में आप हमेशा शुड यूज करते हो. और इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ सपोजिशन, प्रोबेबिलिटी, कंडीशन, तो वहां पे भी आप शुड यूज करोगे. सो सी, वी शुड लव आवर नेबर्स, दिस इज आवर ड्यूटी. You shouldn't behave in this manner, this is the kind of advice that I am giving. You should try your best even if you fail, this is a supposition or a probability. He ran fast, least he should miss the train. तो यहाँ पे क्या है, least he should miss the train is, तो यहाँ पे ये least के साथ में हमने should को use किया. Then comes would and could. Would is always used when you are making a wish, like I would like to have a look at the book. So this is my wish, ये मेरी इच्छा है कि मुझे उस बुक को एक देखना है. तो जहां पे भी आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू यूज वुड. डिटर्मिनेशन, कुछ ही चीज को करने का आप निश्चय कर चुके हो, तो ही वुड डू व्हाट ही वांटेड, वो वही करेगा जो उसने सोच रखा है. Conditions and uncertainty. I would attend the party if I was invited. I would definitely attend the party if I was invited. Refusal. She couldn't refuse my invitation. वो मेरे invitation को refuse नहीं कर सकते. Politeness. Would you mind helping me to lift this box? So this is my politeness. That would you mind helping me to lift this box? Now then comes ought to. Ought to is what? Ought to is desirability, moral obligation and duty. ठीक है. ought to क्या होता है? It's a desirability, it's a moral obligation, it is a duty. I ought to visit her. We ought not to make noise in the class. ठीक है. I ought to visit her कहने का मतलब it's just my desirability that I want to visit her. And we ought not to make noise in the class. हमें क्लास में noise नहीं करनी है. We ought not to make the noise in the class. This again shows what? This again shows the moral obligation. Now disapproval. We ought not to laugh at others. हमें दूसरों पे नहीं हंसना है. तो we ought not to laugh at others. Everybody ought to love his country. This is again our duty, our obligation कि हमें अपनी country को love करना है. Then we ought to have been more careful. हमें जरूरत थी, it was obligatory कि हमें और ज्यादा careful रहना था. Then we move on to the next model, that is need. नीड इज द रिक्वायरमेंट. ओके, इट्स द रिक्वायरमेंट कि किसी चीज को करने की कितनी जरूरत होती है. अब किसी चीज को करना या तो बहुत जरूरी होता है या किसी चीज को नहीं करना जरूरी होता है. तो इट कैन बी इन अ पॉजिटिव सेंस एंड इट कैन बी नेगेटिव सेंस एज वेल. सो शी नीड रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days and she need not worry about us. So she need rest, this is the requirement, and she need not worry about us is in the negative sense. Okay. अब have to. अब क्या है? Obligation. He will have to finish his work in time. अब have to को कहाँ यूज करेंगे? He will have to finish his work in time. Again have to is an obligation कि उन्हें ये काम इस given time period में करना ही है. Now used to, that is accustomed to. He is not used to working a long distance. He is not used to walking long distance. वो accustomed to means उनको आदत हो जाती है किसी चीज की, तो वो यूज टू नहीं है इतना लॉन्ग डिस्टेंस को वॉक करने के लिए, उनको आदत नहीं है. ही यूज टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, उनको आदत है कि उन्हें स्विमिंग. तो दिस अगेन कैन बी यूज्ड इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ नेगेटिव देन वी से नॉट यूज टू, एंड व्हेन इट्स पॉजिटिव वी आर गोइंग टू से यूज टू. अब फिर आ रहा है डेयर. डेयर इज द प्रेजेंट टेंस. ठीक है. ही डज नॉट डेयर टू रिफ्यूज मी, दैट इज ही डेयर नॉट डेयर टू रिफ्यूज मी, वो मुझे रिफ्यूज नहीं करेगा. एंड अगेन देन इंटेरोगेटिव, अगर आप इसका एक क्वेश्चन बनाते हो तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे? हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट. तो अगेन अ क्वेश्चन मार्क, तो इंटेरोगेटिव हो गया. व्हेन डेयर इज यूज्ड इन पास्ट टेंस देन इट इज डेयर्ड. दे डेयर्ड नॉट से सच थिंग्स अगेन. वो ऐसी चीजें दोबारा ना बोले तो ये ज्यादा बेटर होगा. सो दे डेयर्ड नॉट से सच थिंग्स अगेन. So this way we can say that dare can be used in present, in past as well as in interrogative. So this we can say is the models. So models are the mood expressing words and they always are used with the principal verb that follows them and they express the ideas like ability, disapproval, permission, command, obligation, inhabit of, desirability, and moral duties, and some kinds of possibilities and probabilities and advices and suggestions and many more.
So all these are the models that expresses the mood and the idea about what the speaker says. Okay, so these are the models and it's a very important topic. It's also known as model auxiliaries. And how many are there? Like will, would, shall, should, can, could, may, might, need, have to, used to, dare, ought to, must, and so on. Okay, chalo, now do this. This is the topic. I hope you have understood it well. Just go through it. This is all. Now we'll be meeting in our next class with a new topic.